हे वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस चैनल में जहां बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो आज की स्टडी स्टीव जॉब्स के ऊपर है। स्टीव जॉब्स जिन्हें ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है, जो कि फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी है, वो जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि एक दुनिया का फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी, दुनिया का वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 पे आते हैं ये सब यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो वहां पे जब कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ था, तो वहां पे इन्होंने क्या जो है कहानी कही, इन्होंने क्या स्पीच दिया, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जब गए वहां पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो इस तरह से स्टार्टिंग की है। Thank you. I am honored to be with you today here at the finest university in the world. Truth be told, I never graduated from the college degree. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out? उन्होंने कहा, सच जानना है, सच यही है कि मैं कभी कॉलेज से डिग्री नहीं ले पाया और मुझे कॉलेज की पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती थी। इस कारण से मैं वहां से ड्रॉप आउट ले लिया 6 महीने पढ़ने के बाद भी। और ये कहते हैं ये ड्रॉप आउट की कहानी मेरे जन्म से पहले से स्टार्ट होती है, जब मेरी बायोलॉजिकल माँ, जो कि अनवेड थी, जो कि न शादीशुदा हुई और एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, तो वो जो है पहले से ही डिसाइड हो गया था कि मैं जो है रहने वाला हूं एक लॉयर और उनकी पत्नी के साथ। It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. और ये जो है कहते हैं कि अगर लड़की हो तो अच्छी है, लेकिन पता चला बाद में कि वो जो है लड़का पैदा हुआ है, तो फिर उनकी माँ कही, उनके जो पिता कहे जो है ये लड़का पैदा हुआ, तो वो डू यू वांट टू एक्सेप्ट इट, तो बोले ऑफ कोर्स। तो उनकी लॉयर और उनकी पत्नी जो है ऑफ कोर्स हो गई। लेकिन इनकी माँ चाहती थी कि मेरा बेटा जो है, उनकी बायोलॉजिकल माँ चाहती थी कि मेरा बेटा ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास रहे। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो जो उनकी कॉलेज उनकी माँ थी वो भी अंडर ग्रेजुएट थी और उनके पिता जो है वो भी हाई स्कूल से भी नहीं पढ़े हुए थे। लेकिन फिर वो जो है एडॉप्शन पेपर पे साइन नहीं करना चाहते थे, देखिए उनके पिता रखने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें कॉलेज पढ़ाऊंगा। फिर 17 साल बाद, And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में जाने का मुझे पता नहीं चल रहा था कि कॉलेज में मुझे किस तरह से जो है हमारे जो ड्रीम है उसको अचीव करने में मदद करेगी। वो कहते हैं मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कॉलेज में जब मैं था कि क्या करने वाला हूँ अपने लाइफ के ऊपर, मैं क्या बनूंगा, क्या करूंगा अपने लाइफ में। फिर उसके बाद जब उनको आइडिया नहीं पता चल रहा था, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। और जो यूनिवर्सिटी में गए थे वो यूनिवर्सिटी एज एक्सपेंसिव थी एज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लगभग में। जितना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का फीस था उसी के लगभग इनका भी फीस था। ये रीड कॉलेज में गए थे। And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. उन्हें लग रहा था कि इनके जितना भी पेरेंट्स की सेविंग है इंटायर लाइफ की, ये पूरा खर्चा हो रहा है और इससे उसका कोई आउटपुट नहीं निकल के आ रहा था। इसी कारण से जो है ये यूनिवर्सिटी को छोड़ दिए।
और कहते हैं कि मुझे जो है मन नहीं लग रहा उसमें, जो है मुझे इंथुजियास्ट नहीं हो रहा था, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। वो कहते भी है कीप लुकिंग एंड डोंट सेटल, यानी कि वो चीज को ढूंढो जिसमें तुम्हारा मन लगता है, क्योंकि तुम्हें जो पूरा इंटायर लाइफ उसी चीज को वक्त देना है। तो वैसे चीज को ढूंढो जिन्हें तुम्हारा मन लगता है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। इनर हर्ट वॉइस बोलता है तुम नहीं ये काम करना चाहिए। और संडे को एक अच्छा मील के लिए हरे कृष्ण टेम्पल जाते थे। वो कहते हैं कि It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. कैलीग्राफी में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि कैलीग्राफी क्या होता है मैं पहले बता दूं। कैलीग्राफी का आर्ट ऑफ राइटिंग समथिंग, यानी किसी चीज को लिखने का अलग अलग तरीका, यानी कि ए हो गया, ए को लिखने का अलग अलग तरीका जो आप अभी कंप्यूटर में देखते होंगे, डिफरेंट फॉन्ट्स है, ये भी एक कैलीग्राफी है। और ये कैलीग्राफी जो है स्टार्ट होता है। Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. स्टीव जॉब्स के टाइम से, यानी कि वो जो है वही इंट्रोड्यूस किए थे कंप्यूटर के अंदर ये कैलीग्राफी का सिस्टम, फॉन्ट डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं उसका सिस्टम। तो वो कहते हैं कि मैंने कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन की, और कैलीग्राफी ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। और वो जो है कॉलेज क्लास की तरह नहीं था, एक स्क्वायर की तरह, वो जो है डिफरेंट था और उसमें मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इंटरेस्ट था तो इस कारण से जो है उसके ऊपर काम किए, और काम करने के बाद जो है वो कहते हैं कि 10 साल बाद मुझे पता चलता है कि ये जो है मेरे बेस्ट डिसीजन था कॉलेज ड्रॉप आउट लेने का। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब नया कंप्यूटर बना रहे थे 10 साल बाद मैकिन्टॉश कंप्यूटर, तो मैकिन्टॉश कंप्यूटर के अंदर जो है उन्होंने ये जो है फॉन्ट डिफरेंट फॉन्ट जो है डाला, जिससे जो है और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था कंप्यूटर में लिखना। कंप्यूटर का जो है अलग अलग इंटरेस्टिंग है। वो क्या है कि जो विंडोज जो कि कॉपी कर लिया है डिफरेंट फॉन्ट्स को अपने अंदर, ये भी एक है। उन्हें कहते हैं कि जो डॉट्स जो शुरू में दिख रहा था कॉलेज को छोड़ देना बहुत बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो वो मेरा फाइनल डिसीजन। If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने अंदर, you have to believe in yourself। आपको अपने अंदर बिलीव रखना पड़ेगा कि नहीं मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो सही काम कर रहा हूँ। आपको या तो गॉड में विश्वास करना पड़ेगा, you have to believe in God, या फिर आपको जो है किसी ना किसी चीज के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स उन्होंने पहला स्टोरी, उन्होंने सेकंड स्टोरी भी कहा, माय सेकंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस। ये सेकंड स्टोरी हम अगले वीडियो में देखेंगे। My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I love to do early in life. तो फिलहाल आज के लिए इतना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना इसी तरह हर रोज ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।